Hello everyone. Hi. I hope you must have seen my earlier video that was proving sums part 1. Students, अभी हम लोग part 2 पे जाने वाले हैं. मतलब ऐसे और बहुत से parts रहेंगे for proving वाले sums पे. तो definitely students याद से वो देखो and share it to maximum number of students. I'll just share my screen and we'll continue with the sums. Great. Students, अपना सबसे पहला sum ये discuss हुआ था. If you can recall this, correct? आपको देख के भी समझ गया रहेगा. ना first sum यहाँ पे ये first वाला part discuss हो गया, right? On the same basis, there is a second sum. एक फटाफट हम जरा उसका एक रिकैप लेंगे एंड देन वी क्विकली गो अहेड. ठीक है. सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया. दो टर्म्स थे, राइट साइड में तो एक ही टर्म था, सो हमने उसका एलसीएम लेके सॉल्व किया. सो वी गॉट sin square थीटा प्लस cos square थीटा अपॉन 1 अपॉन cos थीटा. करेक्ट. Now in the numerator we have sin square theta plus cos square theta. Whenever we have a square we have to think about identity. तो स्टूडेंट्स ऊपर तो 1 आ गया और नीचे cos थीटा. This is what we have, this is what we want. राइट साइड पे हमें क्या चाहिए? sec theta and 1 upon cos theta is a reciprocal of sec theta. तो right hand side अपने को मिल गया, right? On the same grounds, we are going to start this second one. In left hand side we have sec square theta plus cosec square theta, and right hand side sec square theta into cosec square theta. Whenever we have a square, we need to think about identity. Left hand side लिखा sec square theta. Its identity is 1 plus tan square theta. Students, tan square theta right side में है ही नहीं. cos square theta के लिए, cosec square theta के लिए देखेंगे 1 plus cot square theta. वो भी नहीं है cot square right side में. So in this sum, directly we are going for identity is not a correct step. We should be doing our next step, that is primary sin cos में convert. तो sec theta के लिए लिखेंगे 1 upon cos square theta and यहाँ पे लिखेंगे 1 upon sin square theta. Fractions with different denominator, criss cross bottom. अपना हमेशा वाला step. So sin square into 1 will become sin square. Cos square into 1 will become cos square and denominator उन दोनों का product, that is cos square into sin square. Now students, ऊपर square है, नीचे भी square है, but ऊपर addition का sign है, that is identity. Sin square theta plus cos square theta 1. So in numerator we have 1 and denominator same as it is. This is what we have, this is what we want. At right side we need two different terms. So let us split them. It will be 1 upon cos square into 1 upon sin square. 1 upon cos square, sec square. 1 upon cos square, sec square. They are reciprocals. So 1 upon cos square के जगह पे आ जाएगा sec square. And similarly for 1 upon sin square, it will be cosec square theta. Great, amazing students. We got our right hand side. It's really very easy sum. Now let us try with something different. Okay, एक थोड़ा अच्छा अलग से sum है, वो देखते हैं. That's a problem set 5 का question number 6. Very easy sum. Okay. Just a second. Let me adjust my camera position so it will be easy for you to get an idea. Ta-da! Same step. Left hand side लिखा. Different denominator. Same step. Criss cross bottom. We'll multiply 1 plus sign with 1. 1 minus sign with this वाला 1. In denominator, product of the denominator. तो ये तो प्रोडक्ट बहुत इजी है. ये 1 प्लस साइन इधर, ये 1 माइनस साइन इधर. Now when you compare this with right hand side, we need square, we also need 2. तो पहले 2 देखते कैसे लाने का. Observe numerator. We have plus 1, we have one more plus 1, we have minus sign, we also have plus sign. So sin तो कैंसिल हो जाएगा. 1 plus 1 का तो 2 आ गया, 2 मेरा आ गया बस. डिनोमिनेटर दोनों टर्म सेम है बट दोनों में साइन अलग अलग है. एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव. ये ऐसा कुछ दिख रहा है ना, एट ए प्लस बी ए माइनस बी. अरे ये तो आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो सेम यहाँ पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 भी है, स्क्वायर भी है. स्क्वायर रहेगा तो फर्स्ट थिंग आइडेंटिटी. सोचो, इन विच आइडेंटिटी वी हैव 1 एंड साइन स्क्वायर. फर्स्ट वन sin square theta plus cos square theta, that will be equal to 1. तो उसको जब एडजस्ट करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा 1 minus sin square, that is nothing but cos square theta. Now this is what we have, this is what we want. We have cos square in the denominator and 2 in the numerator. तो 2 1 cos square थोड़ा उसको सेपरेट, ये देखो स्प्लिट करते हैं.
2 ऐसे into 1 upon cos square. अभी ये तो पहले सम में दिखा था 1 upon cos square और वहां पे sec square 1 upon cos square sec square reciprocals, so 1 upon cos square is equal to sec square, तो उसको चेंज किया, simple. We got our right hand side. Now I think there is definitely an improvement from your end कि थोड़ा बहुत confidence आपको आया रहेगा, और वही confidence बढ़ाने के लिए एक एकदम मस्त वाला सम देखते हैं. On that one single page, there are lots of questions are there. Okay, so students, be prepared. Now we'll be starting with this sums. एक ही पेज पे आप देखो 3 sums है. 6.1 का 6th का second है. Problem set 5 का 4th भी question है और 5th भी. These both questions will be, all these 3 questions will cover it up. चलो, ready? Let's bring cos square theta. Then inside the bracket we have 1 plus tan square theta, and that everything is equal to 1. पहले हमेशा वाला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड लिखा. According to Bodmer's rule, सबसे पहले when we have bracket, focus on bracket. So 1 plus tan square theta is there inside the bracket. 1 plus tan square theta. अरे 1 plus tan square theta identity. So वहां पे 1 plus tan square theta के जगह पे आ जाएगा sec square theta. अभी आप सबको एक बेसिक मल्टीप्लिकेशन का रूल पता रहेगा. When you multiply two things and that answer is 1, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी होता है that ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होने चाहिए. And yes, it is. Sec theta is a reciprocal of cos theta. So instead of sec square theta, I'll write it as 1 upon cos square. नीचे का cos square, ऊपर का cos square cancel. 1 बचा 1. We got our answer. This is equal to RHS. Correct? On the same grounds, I'll give you an amazing sum जहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है. Observe. लेफ्ट हैंड साइड लिखा, सारे सम्स में जैसे हमने लिखा था ऐसे. cot square theta minus tan square theta. राइट साइड में देखो, we need cosec square theta minus sec square theta. बच्चा लोग एक सिंपल सा लॉजिक बताओ. Whenever we have a square, we need to think about identity. Correct? So in this question, cot square theta है, इधर cosec square theta है. cot square और cosec square को लेके we have an identity. That 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. In the same way, 1 plus tan square theta will give me sec square theta. मतलब ये क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज करना इज अ करेक्ट स्टेप, राइट? तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो आइडेंटिटी है ना 1 plus cot square and 1 plus tan square, उसके ऊपर से जो 2 एडजस्टमेंट सीखा था इन फर्स्ट वीडियो, वो यहाँ पे यूज करेंगे. इट मीन्स इंस्टेड ऑफ cot square theta, we'll write down cosec square theta minus 1, and instead of tan square theta, we'll write down sec square theta minus 1. Now you can see minus sign के बाद we have two terms, that's why we are keeping them inside the bracket. Minus sign के बाद whatever the term that we have of the minus sign inside the bracket, when we open that bracket, sign will get changed. Before minus sign nothing will change, but after minus sign subtraction का वजह से signs will get changed. तो पहले दो टर्म सेम, बट जो नेक्स्ट दो टर्म्स है, इन दैट इट विल बी minus sec square theta and plus 1. Plus 1 minus 1 easily get cancelled. Two terms are left, we are writing it down. Look at it, it's a right hand side, रे. Answer आ गया. We got our answer. That is cosec square theta minus sec square theta. That's really very, very nice. Amazing, amazing, amazing student. Super. Now students will be starting with the next question. And that's next question is also very, very, very logical. Students, if you can see, we are following one simple pattern. We are reading left hand side. We are seeing if we have a square, we need to go for identity. Then we are checking identity use करके right side में फायदा होता है क्या? Then go ahead. Got it? And whenever we have brackets, first we need to tackle brackets. Okay? चलो. अभी next question देखो. Tan raised to 4 theta plus tan square theta is equal to sec raised to 4 theta minus sec square theta. Left hand side लिखा. Now tan raised to 4 plus tan square. You can see ये 4 में से और यहाँ पे 2 में से we can take definitely something common. तो मैंने tan square common निकाला. Tan square theta common निकालने के बाद we will get a bracket. In that we'll have tan square theta plus 1. Students, observe,
अगेन इट इज लाइक इसके ऊपर वाले सम के जैसे ब्रैकेट मिल गया, तो ब्रैकेट मिला तो पहले तो ब्रैकेट को एड्रेस करना पड़ेगा, एंड इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव अ स्क्वायर. बच्चा लोग स्क्वायर है स्क्वायर, सोचो स्क्वायर. Yes, we can think about tan square theta and 1 and sec square theta. इन तीनों को लेके एक आइडेंटिटी है that 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Superb, superb, superb. Amazing student. Now, अभी वो आइडेंटिटी हम यहाँ पे implement करना चाहते हैं. So for that, I want you to observe. This is our original identity. For bracket 1 plus tan square theta की जगह पे आ जाएगा sec square theta. No issue. बट ये बाजू वाला जो सम है उसमें देखो जैसे हमने वैल्यू ढूंढा था tan square theta का, वैसे यहाँ पे भी यूज करना है. It means instead of tan square theta, we'll put it as sec square theta minus 1, और वो ब्रैकेट के जगह पे तो sec square theta. This is what we have. This is what we want. बच्चा लोग simple step. You know what? ब्रैकेट ओपन कर दो. ब्रैकेट ओपनिंग मीन्स what? दोनों को मल्टीप्लाई. तो sec square into sec square, sec raised to 4 theta, and sec square 1 जा sec square theta. बीच में माइनस साइन as it is. This is what we got, and see what we want. We want the same thing. So we got LHS equal to RHS. Students, if you can see this, in this all the proofs, it's very, very, very clearly I'm saying. Read question carefully. If you have a square, think about identity. And if you are not getting that identity useful for right hand side, then keep observing and converting them into primary. This is the same pattern that we are following, students. Okay, superb. That's really very, very nice. In the next video, students will be seeing some bigger questions. So we'll stop this video right now and we'll continue with the next video. Thank you very much, students. If you really like the video, please do give your comments and also share it to maximum number of students in your society, in your relatives का group, wherever you can reach to maximum number of students, even in your school group. बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत लोगों को ट्रिग्नोमेट्री प्रूविंग में डर लगता है. So let us together help them. Okay, thank you very much. Bye bye, students. Thank you very much.